नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? इतने चेहरे सुबह सुबह उतरे हुए हैं यार आपके, क्या करेंगे हम लोग? काफी ज्ञान मिलने वाला है आपको आज, बच के रहिएगा, मुझसे नहीं। तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस लगे हैं मुझे इस मंच पे लाने के लिए, क्योंकि 1.5-2 साल से तो मैं स्पीकिंग बंद कर चुका हूँ। क्योंकि हम क्यों बोलते हैं स्टेज पे, हम मंच पे आके क्यों बात करते हैं? ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है उससे? दुनिया में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है जो मेरे बोलने से पहले नहीं था और मेरे बोलने के बाद क्या हो जाएगा ऐसा? क्योंकि काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं रूम में, अपने आप से पूछ के देखिएगा कि ऐसा क्या कर दिया हमने बातचीत करके। लिखने और स्टेज पे बोलने में फ़र्क क्या है कि अभी आप और कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप उठ के जाएंगे बाहर तो इम्पोलाइट लगता है, तो बंधे हुए कैप्टिव ऑडियंस की तरह बैठते हो। आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे, आपकी थोड़ी थोड़ी मजबूरी हो जाती है सुनना। लिखने में क्या है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक ने भी पढ़ा नहीं पढ़ा, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप इम्पोलाइट बात मत समझिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, अगर आपको कोई बात अच्छी ना लगे, अगर मैं आपको रीच नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कभी भी उठ के जा सकते हैं, अपना टाइम बचाइएगा। या सो इन केस आई एम नॉट एबल टू रीच यू, आई एम नॉट द पर्सन यू वांट टू लिसन टू, आई एम नॉट मेकिंग सेंस टू यू, you can make better use of your time. And you can have some pleasant time outside this room. It's not an impolite thing to say. We have limited life hours. Spend them wisely. I'll start with the story of 3 frogs. Change की थी मैं आज। मैं 20 साल से सुनता रहा हूँ। 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि चेंज हो जाओ, ये आ गया, वो आ गया, 10वीं तपस्या है, 12वीं तपस्या है, इंजीनियरिंग तपस्या है, तपस्या करते रहो। कोई रुक के ये नहीं बोलता भाई ठीक हो यार, सब ठीक है, ये तो चलता रहेगा, सांस भी ले लो। जैसे विपुल बोल रहे थे कि यार थोड़ा रुक के सोचिए, जो वो एक्सपर्ट्स के लिए बोल रहे हैं वही चीज, वही मापदंड आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी रखिए, अपने आप के लिए भी रखिए। हर बंदे का एजेंडा है यार, यहां पे हर कोई कुछ ना कुछ बेचने आता है आपको। शायद मैं भी कर रहा हूँ, है ना? शायद मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ ऐसी बातें करके, हु नोस। तो थोड़ा बच के रहिए। ये 3 मेढक थे बेचारे, इंडिया में ज्यादा होते हैं ना, सिंगल फ्रॉग इन द वेल चलता नहीं हमारे इधर, तो एक ही कुएं में 3 कूद गए थे। तो एक कौआ, कंसल्टिंग कौआ था, उड़ता हुआ आया कि भाई चेंज इज द वे ऑफ लाइफ, बदल जाओ। अब मेढक बेचारे क्या करें, कुएं में रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, अपने अपने मूड के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बोलता छोड़ो, बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुआं मस्त है मेरा, बहुत बढ़िया है। दूसरा मेढक जो सोचता अरे क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो यहाँ पे फंस जाऊंगा, मैंने तो दुनिया देखी नहीं, मैं तो कौए को बोलूँ रस्सी फेंक, उड़ा के ले जा मुझे यहाँ से किसी अच्छी जगह पे जहाँ कुछ हो। भाई तुमने समुद्र की जो तस्वीर बनाई है, तो मुझे यार वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। सच में इंग्लिश में ना नकली हो जाते हैं लोग। एनीवेज, मैं बोल के दिखा देता हूं, जैसी इंग्लिश मुझे आती है, आपको मजा नहीं आएगा। सो 3 फ्रॉग्स इन द वेल। चेंज होगी ना? ये अंग्रेजी मेढक बड़े परेशान करते हैं यार। सुन लीजिए, आपके लिए अलग से प्रेजेंटेशन ले लूंगा मैं यार, आजकल ना मन कर नहीं रहा है इंग्लिश में बात करने का, थक चुका हूं थोड़ा। सो द फर्स्ट फ्रॉग, सेलिएंट पॉइंट ट्रांसलेट कर देता हूं, ठीक है, शायद बात बन जाए। तो थोड़ा मैं हाथ बढ़ाता हूं, थोड़ा आप अपने कान बढ़ा लीजिए। सो फर्स्ट फ्रॉग इज सेटिस्फाइड। नाउ हु आर वी टू से right or wrong? The frog is happy. The second frog,
बर्बाद होगी लाइफ। वो कौवा ही मुझे ले जाओ कहीं पे, यहां से जंप्स आउट, नेवर कम्स बैक। दिस अदर फ्रॉग, वो सोचता है कि कुआं तो अच्छा है, पर कौवे की बात भी सुन लेनी चाहिए। कुछ ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ही इज राइट, हु नोस। टिल आई एक्सप्लोर, हाउ वुड आई नो। सो कौवे की बात सुनता है, कुएं के बाहर जाता है। अब कौवे की एक किस्म तो होती नहीं, हो सकता है वो बेवकूफ बनाने वाला कौवा हो सकता है अच्छा कौवा वो सच ही बोल रहा हो, बट यू वुड कम टू नो ओनली व्हेन यू एक्सप्लोर। थोड़ा बाहर निकल के देखें। जब आपको बाहर निकल के एक सच्चाई सामने आती है, चॉइस उस वक्त आपकी होती है कि आप कुएं में वापस आएंगे और डिस्पाइट नोइंग द ट्रुथ आप कौवे के साथ निकल पड़ेंगे। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड था, ये तो कहानी शुरू हुई है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? कौन सा मेढक मरा? फ्रॉग ए, बी, सी। विच ऑफ दीज फ्रॉग्स डाइड? ऑल फ्रॉग्स डाइड। तो देखिए कि क्वेश्चन डेथ का है ही नहीं। आपको जो बोला जाता है आप फेल हो जाओगे, फेल नहीं होगे यार। कोई रेडी खोल लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई टीचर बन जाएगा, राइट? कोई बिजनेस कर लेगा, कोई डेवलपर बन जाएगा। यू वुड फाइंड अ वे। फेलर फूलर कुछ नहीं है। ये डरने से पहली बात तो बाहर आ जाओ। बात क्या होती है? बात ये होती है कि जो आप करना चाहते हैं क्या आप वो कर पा रहे हैं, और जितनी देर तक आप जिंदा रहे वो जिंदगी कैसी थी। क्वेश्चन ये होता है। मृत्यु, उसका आप क्या कर लेंगे? तो ये चेंज की थीम है, बच के रहिएगा थोड़ा। मेरे पास स्लाइड्स नहीं है यार, 15-20 मिनट में जो जुगाड़ में कर पाया करके आया हूं। तो एक दो बातें करनी है, दे आर वेरी सिंपल इन नेचर। विपुल मेंशन्ड कि क्या चल रहा है नेट पे, सो सोचा आपको थोड़ा सैंपल दिखा देता हूं, ठीक है? बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग द थ्रेड। सो वन ऑफ द चैट जीपीटी का थीम था यहाँ पे, सो आई थॉट के थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लूँ थीम की। So this is an example which has created a lot of fuss on the web in the last 2 months. बहुत शोर है, बस एकदम आप पूरा पॉपकॉर्न लेके बैठिए, मजा आ जाएगा आपको। So this example was a BVA example shared by somebody, and then Michael Bolton wrote a post कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है दुनिया में। And then Jason Arben, if you don't know the name, if you want to follow one guy today who gives concrete links and is extremely biased, that is Jason Arben. So what should you do? वो bias वाला थोड़ा हटा दो, अच्छी knowledge share करता है बंदा, ठीक है? तो he took this and wrote a post on कि चैट जीपीटी तुम्हारे उन एक्सपर्ट टेस्टर से कहीं ज्यादा भयंकर टेस्टर है। ये रहा वो आर्टिकल। सो जस्ट गो थ्रू इट। इस आर्टिकल का टाइटल है टेस्टिंग बोल्टन एआई, ठीक है? अब बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, अराउंड 9000 वर्ड्स, ठीक है? अब आपको लगेगा मजा ही आ गया यार, दिस इज व्हाट चैट जीपीटी इज, डर जाओ या यूज करो इसको। व्हाट आई रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बात बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से स्टार्ट होके पता नहीं किस डायरेक्शन में चली गई है। इसको स्किल नहीं बोलते हैं। ये वही टेस्टर की इंटरव्यू है जिससे एक फोकस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वुड यू टेस्ट इट, और वो 25 आंसर दे देता है, इधर उधर के उस बात पे कभी नहीं आता। देखा है आपने? तो ये साउंडिंग स्मार्ट ही है। ये आर्टिकल में ही इज बिल्डिंग अ केस के चैट जीपीटी इज वेरी इंटेलिजेंट। द क्वेश्चन इज कि अगर 9000 वर्ड्स हैं तो क्या वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पे हैं कि ये बंदा बीच में एक्सेसिबिलिटी ले आएगा, ये ले आएगा। भाई, इफ यू टॉक ऑन 50 रैंडम टॉपिक्स व्हेन यू आर आस्क्ड वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट इट, यू वुड लुक इंटेलिजेंट। इसको नॉलेज नहीं बोलते हैं, पर इसके अंदर यहां वहां पे अच्छे इनपुट्स भी हैं, अच्छे इनपुट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ईयर प्रॉब्लम, तो बीच बीच में ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे हो सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। आप इन 9000 वर्ड्स के आर्टिकल को पूरा सच मानना चाहते हो
कि आप इसमें से चूज करोगे व्हाट मेक सेंस टू यू। ठीक है, ये रही एक दिशा। यहां पे कंसल्टेंट्स नहीं रुकते हैं, यहां पे भी एजेंडा है, वो आपने देखना है। दूसरे साइड का एजेंडा भी देख लेते हैं। सो जेम्स बाक, माइकल बोल्टन, वेन रोजबेरी, अच्छे लोग, ये वो लोग हैं जिनकी किताबें पढ़ के मैंने सीखा है उनसे। मेरे टीचर्स हैं, विपुल मेरे टीचर हैं। एक बार बहुत घमंड हो गया था मुझे नॉलेज का, परफॉर्मेंस टेस्टर था मैं। आप में से कुछ लोगों को चल रहा होगा माइंड में, इसलिए रिलेट कर पाओगे आप। बहुत घमंड था मुझे। आई बिकेम अ परफॉर्मेंस इंजीनियर इन इंडिया जब परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग फील्ड की ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टर बन गया। इसको सोने पे सुहागा भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं एक करेला दूसरा नीम पे चढ़ा। तो बहुत घमंड आ गया मन में कि मैं तो तोप हूँ। तब मैं इनके सेशन में बैठा जिसमें मैंने देखा कि टेस्ट डिज़ाइन कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सब तहस नहस हो गया था 15 साल पहले, 2008 में सर। टेस्ट 2008 कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। तो ये आपको वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें फ्रॉड, फूल, बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। पर देयर इज एन एनालिसिस जो इन लोगों ने पब्लिश किया एज अ क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। वन ऑफ यू मेंशन क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज अ गुड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज पेपर, नॉट एन एआई पेपर इन माय ओपिनियन। ओके, उस लिहाज से आप जरूर पढ़िए कि कैसे यू कैन एनालाइज थिंग्स। सो इन्होंने अपने ढंग से उसको एनालाइज किया। नाउ दीज आर टू एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स। एक जो ये दिखाना चाहते हैं कि एआई एमएल से सब कुछ बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट एआई एमएल का है। दूसरी तरफ वो जो ये बोलते हैं नहीं, ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमंस, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट ह्यूमंस है। उनका सारा कोर्स, उनका सारा अब तक का काम इस चीज पे टिका हुआ है कि ह्यूमन ही टेस्टिंग करेंगे। और इसके बीच में है हिप्नोटिक सजेशंस। ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, उतनी नहीं। ये जो उतनी नहीं है लिखा नहीं होता। ओके, ये लिखा नहीं। और ताकि वो बाद में वो सेंटेंस दिखा सकें, हमने कब बोला कि ऑटोमेशन बुरी चीज होती है। उसी तरह जेसन के वर्क में एआई ये तोड़ देता है, एआई वो तोड़ देता है, फिर बीच में ह्यूमंस यू शुड लर्न टेस्टिंग, ताकि वो एक स्टेटमेंट दिखा पाए, मैंने कब कहा ह्यूमंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होता है हिप्नोटिक सजेशन। आपको प्राइमरी पैशन समझना पड़ेगा लोगों का, ताकि आप वो चीजें यू कैन डू इट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। This is all in English, so I hope my Hindi wouldn't have hurt you. Go there, find Jason Abin's work, find Michael Bolton's work. Everything is in English. इसीलिए थोड़ा प्रोफेशनल है। तो बात पे आते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन ये है। ओके, वेरिएबल एक सोच है। एक तो ढंग की बात करके जाऊं यार। So let's look back. अब ये थी बातें। तो एक कहावत है कि ओपिनियन इज लाइक अ नोज, एवरीबडी हैज वन। देखिए पॉलिटिकली करेक्ट कर दिया मैंने। नहीं तो कॉन्फ्रेंस में बुलाते नहीं मुझे दोबारा, अगर मैं सही वाला बोल लेता तो। तो नोज ही मान लीजिए, हर बंदे के पास होता है। मैं भी ओपिनियन लेके आ रहा हूं। थोड़े सच देख लेते हैं आपकी आंखों के लिए। थोड़ा होमवर्क करके आया हूं मैं। तो अमेज़ॉन में ये देखिए, इधर छोड़ दीजिए, 4 पसंद है तो देख लीजिए। यहां पे एक फील्ड है, ये एक छोटा सा फील्ड है यहां पे, ठीक है। एज अ टेस्टर आप इस स्क्रीन पे आते हो। अप्लाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस प्लीज ऑन द प्रोडक्ट क्वांटिटी। अप्लाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, व्हाट आर द वैल्यूज? जल्दी जल्दी प्लीज, टाइम अनलिमिटेड नहीं है। Input is fixed. Why would we apply boundary value analysis? Fair. Any other answers? देखिए मेरे पास क्या तरीका है। On one side, I can talk of the biggest things, as vague as most of the people talk about it. I'm an AI ML layman. It would not be the right thing to do. The second part of what we call a keynote. What is a keynote? Do you know what is a keynote? This word comes from music. कीनोट वो बेस सुर होता है जिसके आसपास आपका पूरा गाना बना होता है। तो कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल मे बी द कीनोट इज व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर, बट कीनोट इज व्हाट राइम्स विद यू, व्हाट आर यू राइट नाउ। एंड राइट नाउ फॉर मी इट्स द एब्सोल्यूट बेसिक्स। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज द फर्स्ट टेक्निक वी टॉक अबाउट। इफ वी डोंट नो दैट वेल, तो थोड़े बात कर लेना ना एआईएमएल की, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज द कीनोट टुडे।
ओके, लेट्स ट्राई दैट आउट। एक बंदा चेंज करना है मुझे इस रूम में बस। ओके, वन पर्सन जो ऑलरेडी उस रास्ते पे है, एंड देन ही थिंक्स ओके समबडी एल्स आल्सो थिंक्स लाइक मी, दिस पाथ इज ओके, बेसिक्स आर ओके। सो this is the drop down list which you come across. Now when you look at any textbook or boundary value analysis, when you talk about it, you're given a variable, you're given this rule, and immediately you say 0. Okay, 0 लगाएंगे, लगाइए 0. Okay, this is the gap, इतना सा gap. And then what does the tester think? Whatever I learned was theoretical. When I bring that knowledge to a real life situation, it goes off. इसके बीच में gap है. The testing literature has a functional testing bias. ठेका ले लिया functional testers ने सारी दुनिया के core of testing का, कि functional testing एक base होती है. The way the techniques are taught to us, it has this bias of a black box functional tester. इस bias को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, आप हमारे टेस्टिंग के कोर के सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, इसके बाद मैं कीनोट खत्म कर दूंगा। व्हाट डू यू थिंक इज अ वेरिएबल हियर? क्या नाम देंगे? इफ यू राइट अ टेस्ट केस, हम टेस्ट केस राइटिंग की बात कर रहे थे, ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द वेरिएबल नेम हियर? क्वांटिटी। क्यों? साथ में लेबल दिख गया इसलिए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ओके। आंसर इन छोटे डिटेल्स में ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा जो आप यूज कर रहे हो, पर इस तरीके से कर नहीं रहे, ठीक है। तो आपके नजर में वैल्यूज हैं 1 to 11 और इस वेरिएबल का नाम है क्वांटिटी, करेक्ट। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं अभी। आप टूल ये यूज करते हो तो क्या है ना कि देखना नहीं होता। तेरी अख नहीं वेखण वाली, बोलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेनों ताइयों दींदा दख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। हाँ, you don't have the eye to behold. It's right in front of you. Seeing is not seeing. You have seen this thing. You know HTML. I would assume all of you have done this at some point, but you're not relating it to techniques. Now tell me, what is the actual value? Is it this 11? Is it this 8? Or is this the value? So what you saw on the screen was a facade. What is the name of the variable? Was it the label? You know that label is just an associated field. पर आपने उसको मान लिया, तो इन्होंने रखा क्वांटिटी हुआ है, पर इसको तो राहुल भी बोल सकते थे ना। ये वेरिएबल एक सोच है। So you thought you cannot provide 0, isn't it? Why cannot you? कौन रोक रहा है यार? कौन रोक रहा है 0 प्रोवाइड करने से? See, whenever we talk of layers in testing, people immediately jump to UI and then API. So you either follow requirements at this layer, or now you're dependent on requirements or second layer somebody would write for you. ये टेस्टिंग के बेसिक्स नहीं है यार। वेरिएबल कुछ भी नहीं होता। If you pick up the definition of variable from programmers and developers, that is not the thinking which would directly help you when you come up with tests. What was the type in your mind? Number. Do you realize? I have an article, I call it Ichhadhari data. You see, it could have been any string. So this is the concept of interface constraints. आपको करना क्या होता है? You take a technique, you have to imagine कि ये value जो है ये travel करती है through various variables. How many you don't know? You can call it infinite. And then at each layer, it can have a representation, it can have a value, it can have a length, it can have a type. So you can say this is this layer, I would write test for this, or you can think that a technique of testing technically travels through these layers. हर जगह पे कभी नागिन, कभी श्रीदेवी, okay? या स्प्लिट पर जिस भी तरह से सोचना है। सो दिस सिंपलिस्टिक व्यू, somebody would say this is security testing. No, this is not security testing. This has no thought of security right now. This is just basic value manipulation. This has to be learned. What is the target of this manipulation would make it which quality dimension you're hitting. मैं आपको सिर्फ ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जाइए
Try to do this with ChatGPT. Okay? ये जो sure है ना ChatGPT. ChatGPT would give you this information if you know this already and then ask. Yeah. Yeah. So you see, when you look at Jason Arbon's article, for example, the questions which he's asking in the name of prompts, please think who can ask these questions and what are the skills of testing which this person would need to have. Okay, so low-hanging fruits. If your boundary value analysis is that I see an interface, how can I do boundary value analysis on that? That is the constraint part. Okay, so keep it open. Keep it open. Go back to your basics. I think this is a constant message since morning, isn't it? I just wanted to demonstrate it to you that there are developers, there are people out there who are belittling the craft. So when you say a developer cannot do testing, frankly, developer can do basic BVA. It's not that tough. A kid can also subtract that -1 + 1. There is no skill really involved. So how does a tester say that I am good at testing? This is my field. When you go deeper. When you go deeper. As for the change and other things, I think this is what I wanted to discuss at its heart. Just a simple fact. Go back to basics, because if we don't understand these parts, the other things are going to definitely go away to AI and ML. Basic logic, you don't need AI ML also to do that. It's -1 + 1 given. That's not the level of intelligence to lose our jobs to. Okay, so let's go back to basics. Let's practice. And then let's see if next year in this conference we have a different theme. Because the theme of change is a bit old now. Okay? Change the theme. Thank you very much. Hello. Okay. So, thanks, Rahul. I'd like to present a counterpoint. And that counterpoint is the 2 or 3 different things that I'd like to present. So, guys, do you know what is the definition of a PhD? One who knows more and more about less and less. Right? So, Rahul went there, showed you a nice trick, showing data how it is actually being transmitted as a string and so on. Does it really matter when you are testing? Neat trick, but as a tester, probably it doesn't matter to me at all. Because if I select 1 and finally I get 1 in the database and it gets processed as 1, I'm done. I don't need to know all the internals. Because then his next step would be, oh, but do you know how data is represented in bits? And how does it really go, how does the HTTP take it as a payload, go to TCP/IP? How is that packet then transmitted over the physical network? There's no end to it, right? So you have to also understand when do you need to stop. But in order to stop, first you need to know what all depth is there. So I'm not saying what Rahul said was wrong, but what I'm saying is I want you to qualify that with this particular information, that you can go as deep as you want. When do you stop? Because you are a tester who's been given a job to do testing in certain number of hours. So from a testing perspective, it may not matter. From a thinking perspective, it definitely matters. So what Rahul is saying is encouraging you to think, but at some point of time, जब सोच गहरी हो जाती है तो इरादे कमजोर हो जाते हैं. So don't let your thoughts turn so deep that you get into analysis paralysis and then you are not able to figure out, or you do useless tests which are not really going to add value. First, most important thing. I think Rahul would agree to more or less what I'm saying. Partly. Yeah, that's why I use the word more or less, because that hypnotic suggestion has to be there, right? Second thing is about AI and ML. And I feel very strongly about AI and ML because I've been in this field for a few years now. I have a product, so let me tell you what I sell. Not selling here, but what I sell. I have a product to test AI. So we test how the AI models that people create. Our product tests those AI models. So it's not about how to use AI in testing. So do I know what AI is?
not very deep, but of course, to build the product, you have to know a little bit about AI, so I know a little bit about AI. What ChatGPT and this article, I did a similar presentation recently, just a few weeks ago, showing these exact slides or article and so on. Believe me, ChatGPT will be as smart as you are. It's just a matter of time. If you think that today ChatGPT gives you only 4 or 5 or 10 boundary values, that is because it hasn't been trained well enough. Now what you need to do, provide this more information, more context, it will learn and it will apply it at so many different places in so many different ways, you would be astounded. What is it that I'm saying? ChatGPT will become smart. It is smart already, but right now you need to prompt it properly. The next evolution would be when you don't even need to prompt it properly. It will understand what you are saying, right? It will be able to contextualize things more, and it will then ask you, do you want me to go deeper? And it will be able to give you deeper answers as well. That day is not far. 5 years or 10 years doesn't matter. What I'm saying is this is going to happen no matter what Rahul says, what James Bach says, what Michael Bolton says. Jason Urban had a thought that if I can capture the brain of a tester and then say test like Michael Bolton, or test like James Bach, or test like Rahul, if it has captured enough information about what is the thought process, and it's not a very difficult thing, all you need to do is provide data, it would be able to actually do all of those things as well. And that day is not far. So राहुल को खुद नहीं पता राहुल कैसे सोचता है. तो बात ये है कि I think विपुल जो आपके points हैं, machines are going to get smart. There's a relation to the data we are feeding, and garbage in, garbage out. Yeah? So that would improve, the logics themselves would improve. So machines are going to learn, so what are you going to learn? Are you going to look at them learning more and more better? So the question which I faced in my career, because I have not really been a business person, I tried, I was unsuccessful. So those are not the problems, the strategic problems which I've strayed from. So my ideas don't really find empathy with the business people today, with the management layer mostly. I'm the voice of the tester here. So let me tell you one thing. The question when you talk of risk-based testing, if I give you 2 days to test, so a lot of testers complain that we have less time to test. Let's reverse the situation. Let's say you thought you need 15 days to test, okay? And you were given 5 days, you complain, right? What if I give you 30 days? Would you repeat these 15 days? Or do you have ideas to do more in the rest of the 15 days? If I believe in you want people to believe in testing, right? What if I give you 60 days? Do you have the capability and the skill to continue generating more and more ideas when time is made available to you and when you come across a person who respects testing? If not, then don't look at the industry and blame कि यार testing की respect नहीं होती. पहले अपने आप को उस level पे हमें लाना पड़ेगा. And as machines become intelligent, मैं ये बोल रहा हूँ कि do you want to become totally irrelevant on that day? Or you still have the skill where you can work along with AI/ML as a unit. The level of skill that would take is not the boundary value analysis -1 +1. We have to get away from that. This is a thinking which would help you that day. Because this, and you can mark my word, 5 years from now, this thinking would still be missing in AI/ML. Why? Because the creators of AI/ML, not because of capability, they are busy automating or building intelligence on the low-hanging fruits, not the deeper fruits. That is available in today's ChatGPT. These values would become 4, 6, 7. That's where it would stop. But the layered thinking, because the data is not fed that way. Which data? They say data is not present in the industry yet. So what is there to feed? So keep your eyes open. There is a practical, pragmatic thing, which Vipul said that we have to stop somewhere. We cannot make a research project out of everything. My thing is, you become a researcher. Okay, test researcher,
in your own, and when you solve the problem for a project, be pragmatic the way Vipul mentioned to you. On that note, thank you very much. Let's catch up. Rahul will be around for the questions. मजा आया? तो ताली बजाइए. Don't quote me against the politician who keeps doing it in parliament. मजा आया? ताली बजाइए. Okay. So the idea that I can understand now is that, seems like nothing will be impossible in few years, isn't it? Ask a tester, he will say exhaustive testing is impossible. I would like to call upon stage Jay Pradeep. We call him JP, and present a token of appreciation to Rahul, please.